Well, Prime Minister Modi made big announcements yesterday. Boosters for all those above the age of 60, frontline healthcare workers. They'll all be eligible to get their booster shots from the 10th of January. The Prime Minister has called this precaution doses. Another crucial announcement made by the Prime Minister was vaccination for those below the age of 18. Now, everybody between the age group of 15 and 18 is eligible to get their vaccination from the 3rd of January. The Covaxin vaccine has been cleared by the drug regulator for all those above the age of 12. So Covaxin is what will be given to children in India for now. Prime Minister has also talked about a nasal vaccine to begin soon. He's alerted people over the spread of Omicron, but said there's no need to panic so far. How do we make sense of the Prime Minister's announcement? What is a booster dose? Which dose are you eligible for? Are you even eligible? To answer some of those questions and to make sense of these big announcements, we have a panel of experts joining us on NDTV. Dr. Chandrakant Laharia, epidemiologist and health system specialist, is with us. Thank you very much, Doctor, for being with us. Dr. Aprajita Gautam, President of the Delhi Parents Association, is also with us. We also have Kanishk Yadav, Nursing Officer of AIIMS, with us. Thank you all very much for being with us on NDTV. Dr. Laharia, want to begin by asking you, do we have any clarity, any indication yet on what a booster dose is going to entail? Is there going to be a mix and match of the COVID-19 vaccines that are currently available here in India, or have those people who've got Covishield get the Covishield booster, and those who've got Covaxin will be eligible for the Covaxin booster? So the third dose, which is being recommended for healthcare workers on 60 plus with comorbidity, the experts have agreed that the third dose should be based upon a different platform. Now, India does not have that kind of choice, that it has only 2 vaccines and those 2 vaccines have not been studied. But what we are hearing that there are few vaccines which are in the pipeline, Corbevax and Novavax, which might be approved in the coming days, especially the Novavax, which is the Indian counterpart Covovax, had been given emergency use listing by World Health Organization. And by that criteria, this vaccine can be quickly approved within India. So considering from now till start of a third shot for an elderly and healthcare worker on 10th January, there are 2 weeks. So if that vaccine is approved, that could be a good booster shot or third shot. But I'm sure that when Prime Minister has announced this decision, some of the background work must have been done by the expert committee. And this is a policy announcement, and what we expect that sometimes today or tomorrow or maybe in coming days, there will be a detailed operational plan which technical expert would release. And my understanding is that it is more likely to be a new vaccine which could be administered to, which might be approved in the due course, which will be used. But considering this is the final point is that this is not being called booster and this is being called precaution dose. So it is very much possible that if there is no other option available, the Indian government can decide to use a third shot of the same vaccine as a precaution dose. Okay. So no clarity yet on whether the third shot is in fact going to be the same as the first 2 doses that one has got, whether it's going to be different. Dr. Laharia, they're interestingly pointing out that there are 2 other vaccines that are in the pipeline, but will doses be made available so quickly is the big question. Also, Dr. Laharia, 80% of our population has got Covishield. So if they are to get a Covaxin booster, there are questions on whether so many doses can be made available so quickly or not. But I want to just, get in a quick reaction from both Kanishk Yadav and Aprajita Gautam as well. Aprajita Gautam, the other big announcement that I think a lot of parents have been waiting for is when will children in India get vaccinated? It is closely linked to decisions on sending kids back to school, etc. We know that now children above the age of 15 can start getting their jabs from the 3rd of January, but only the Covaxin vaccine has been approved. What do you make of this decision? And are you concerned that the data of Covaxin in kids has not been made public yet? थैंक यू। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगी पेरेंट्स की तरफ से, ये जो एज क्राइटेरिया इन्होंने दिया है 15 to 18, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये जो प्रॉपर ये जो एज बैंड आ रहा है
वो आपके बोर्ड के बच्चों को आ रहा है। लास्ट ईयर हमने यही देखा था, 99% पेरेंट्स का यही कंसर्न था कि जब तक वैक्सीनेशन नहीं होगा तो हम बोर्ड के एग्जाम्स के लिए भी बच्चों को नहीं भेज सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लाखों बच्चे जो इस बार अभी 10th और 12th जिन्होंने देना है, टर्म 2 का एग्जाम देना है, उनको बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। इररिस्पेक्टिव ऑफ कोवैक्सीन मिलेगी या कोविशील्ड मिलेगी, अभी हम उस डिटेल में नहीं जाते, क्योंकि जैसे आपने भी बताया और अभी तक उसकी क्लैरिटी नहीं हुई है, क्योंकि उन बच्चों को तो सिंगल डोज भी नहीं लगा, तो इसलिए मैं बाकी उसके वेरिएशन की हम बात नहीं करते। तो अब मैं बात, अगर हम बात करें कि 15 to 18 की एज के इन बच्चों को जो टोटल अगर हम फिगर देखें तो 10% ऑफ पॉपुलेशन है, जो हम इनका डिटेल देखते हैं, तो उसके हिसाब से तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट का। बिफोर दिस सेकेंड टर्म अगर बच्चों को वैक्सीन लग जाता है तो पेरेंट्स को या बच्चों को वो डर नहीं रहेगा कि वो एग्जाम्स के लिए भेज सके। दूसरा, जस्ट आपके चैनल के माध्यम से मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, जो अप्रॉक्स 30% पॉपुलेशन है वो भी स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उनके भी फाइनल एग्जाम्स आ रहे हैं, वो भी 2 साल से स्कूलों में रह रहे हैं, और आज अगर स्कूल अगर बच्चे जा रहे हैं, पेरेंट्स बहुत डर के भेज रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके दिल में दहशत है। और ओमिक्रॉन मेरा सवाल ये था कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन वैक्सीन को क्लियरेंस मिला है फॉर द एज ग्रुप ऑफ 12 एंड अबव, बट डेटा क्या है ये अभी तक हमें पता नहीं है। What is the efficacy data when it comes to children? We don't know that yet. It has not been made public yet. So as a parent, are you concerned about that? देखिए, एफिकेसी रेट तो हमने जब बड़ों के लिए भी वैक्सीन आया था उसके ट्रायल के बाद ही एफिकेसी का पता चला था। जब ये लगना शुरू होगा, और हम ये देख रहे हैं इससे पहले भी जो बड़ों को वैक्सीनेशन लगा हुआ था, That's the question. Are you comfortable with it? बाद में पता चला था। बट आप कंफर्टेबल हैं उससे? देखिए, जान बचाने के लिए हम एफिकेसी की डिटेल में नहीं जाते, और मुझे अगर बच्चे को बाहर भेजना पड़ेगा तो मैं ये चाहूंगी एक डोज मेरे बच्चे को लग जाए। डेफिनेटली एफिकेसी भी एक क्राइटेरिया मेरा रहेगा, बट मेरे पास चॉइसेस नहीं है। So what you say, Ms. Gautam, is very important. Let me also get in Kanishk Yadav into the conversation. You're a nursing officer at AIIMS, and one of the long-standing demands of experts, doctors working on the front lines has been give protection, additional protection to our frontline healthcare workers. If India is to see a surge जैसे हो रहा है अभी यूएस में, यूके में, यूरोप में, अगर ऐसी सर्ज गॉड फॉरबिड इंडिया में आएगी, द एंटिसिपेशन इज, द हेल्थ मिनिस्ट्री हैज सेड कि 14 लाख केसेस हो सकते हैं इंडिया में. मिस्टर यादव, आर यू हैप्पी विद दिस मूव टू गिव बूस्टर्स टू फ्रंटलाइन एंड हेल्थ केयर वर्कर्स? बिकॉज डेफिनेटली 100% मैं बताना चाहूंगा हेल्थ केयर वर्कर के बिहाफ से ही कि जैसे हमें ये खबर मिली तो सारे हेल्थ केयर वर्कर्स में एक पॉजिटिविटी आ गई कि हाँ, हमारे भी तो बार बार जो मीडिया में भी चल रहा था और एक समय की डिमांड भी थी कि हमारे लिए बूस्टर डोज लगाई जाए, जो कि हम देख रहे हैं कि जो एंटीबॉडीज हैं वो वैक्सीनेशन के बाद भी इतने लंबे टाइम तक नहीं बन पा रही हैं, तो ये बहुत जरूरी था और हम सभी बहुत खुश हैं. और दूसरा, मैं बीइंग ए पेरेंट भी बड़ा खुश हूं कि ये बच्चों के जो जैसे आपको मैं बताऊं, जो एफिकेसी की आप बात कर रहे थे, डाटा रिलीज नहीं हुआ, लेकिन मैं खुद उसका एक पार्टिसिपेंट बन के गया जब अडल्ट्स में ट्रायल हुए, और जब बच्चों की बात आई तो मैं अपने बच्चे को भी इसमें एनरोल करना चाहता था, और मैं एक दिन लेट हो गया और मुझे पता लगा कि विद इन 24 आवर सारा जो सैंपल साइज होता है, जो पार्टिसिपेंट जितने इंश्योर करने होते हैं, वो पूरे के पूरे हो गए. तो ऐसा नहीं है कि कोवैक्सीन ने जब अपने ट्रायल किए तो उसके पास डाटा नहीं है, डाटा है, टाइम लगेगा उसको आने में. बट बीइंग ए हेल्थ केयर वर्कर और बीइंग ए पेरेंट, मैं 100% श्योर हूं कि ये वैक्सीन काम करेगी. हमारे लिए तो एक बिल्कुल ये बहुत अच्छे समय पे आउट हुआ है. No questions there, Mr. Yadav, on the safety profile of the vaccine. The question is, should the government release the efficacy data in order to clear any doubts that parents may have before they decide to vaccinate their children? But important announcements being made there by the Prime Minister yesterday. There are several questions that still need to be answered, and like Dr. Laharia said at the very outset, one hopes that in these 2 weeks to come there will be a clarity on whether or not the same vaccine will be given as a booster, or indeed we are in the process of approving another vaccine which can be administered as a booster dose. Thank you all very much for joining us with your perspective. We'll track this story very closely.